Namaskar, Jai Jagannath. Let's quickly discuss today's two MCQs. Aji, I quizzed you on two aspects of India's polity. What are India's unitary features? And I asked you a question on parliamentary privileges. So let's quickly discuss these aspects because टिके आंकर depth अच्छी, टिके complexities अच्छी, टिके concepts अच्छी जोटा आपण माने बुझिले ही questions गुड़ा solve करि परिबे. I am sure most of you already know these concepts because I'm getting very good responses on these answers. 80% correct, 90% correct, 60% correct. But for those of you who are still new to this field and are you know टिके confusion अच्छी ये सब जिनसों को नहीं की, I'll just quickly try and discuss a few aspects. Okay. So unitary features जानिया पूर्वरु आपन को जानिया को पड़िबो what is federalism. माने federalism and unitarianism are basically two forms of government. दीटा अलग अलग form of government. Countries like Britain, China, South Africa, Japan, France ए माने होचंदी unitary countries and or rather 80 unitary governments होचंदी. And countries like US, India, Canada, they are all federal countries. We are all federal countries. India case is unique because India there is something called federal sui generis, which is also which basically means कि इंडिया रे फेडरलिज्म फेडरल सहित केतेटा यूनिटरी फीचर्स भी अछि. It's a unique combination of both these aspects. So let's quickly discuss what is federalism, what is unitarianism, etc. So federalism रे two clear forms of government: state government, central government. Okay, there is division of power, clear division of power. This is backed by written constitution so that कई माने चीटिंग करिया को चेष्टा करिवेनी. जणे कहबनी कि मु हेली बेसी पावरफुल आ जणे कहबनी कि मु हेली बेसी पावरफुल. तमरो पावर्स तमे देखो तांको पावर्स से देखिबे एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा हेतिबा निहाती and that's a federal government. Okay, so these are the two or they can be 2 or 3 layers. Of course central government हे परिबो, state government हे परिबो, and जेमते इंडिया केस रे अछि पंचायती राज local government भी हे परिबो. Okay, now federal countries of formation, there is a coming together type. These are all very hot prelims topics. Okay, there is a coming together type, there is a holding together type. Coming together रे US रो हिस्ट्री आपन टिके पढिया पड़िबो. स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट एंटिटीज थिले आगुरु और तांकर निज निजर जते बेले गोटे माने आइडेंटिटी वाज अलोन, से माने अलोन थिले, से माने अलगा अलगा स्टेट्स थिले, अलगा अलगा कंट्री भी कहि परिबे. दे ऑल डिसाइड कि ओके मे बी अलगा अलगा रहले हमर किछि लाभ नै, let's come together and form a confederation of states which eventually becomes a country, which is US रो 10th amendment जदि आपण जिबे वर्ल्ड हिस्ट्री जदि पढिबे UPSC एस्पिरेंट जदि आपण भितर के हेतिबो. So US रे 1773 रे US got independence. से ब्रिटेन मोनार्की को कहले कि आमे तो अंडर रहिबोनी, all those famous freedom fighters of US. And then 1791 रे 10th amendment रे all these states came together and formed a confederation of states. Federalism आसिला and तांकर निज भितर से माने कहले कि एमती गोटे सेंटर रहइबो, केतरा स्टेट्स रहइबो, सेंटर रो पावर्स ता पाखरे, स्टेट्स रो पावर्स ता पाखरे. ओके, so ये हेला coming together. What is holding together? Holding together जेमते इंडिया रो एग्जांपल, आमे जते बेले इंडिपेंडेंट हेलु ए सब छोट छोट स्टेट्स 560 केते प्रिंसली स्टेट्स जोडा आमे लक्ष्मीकांत रे एते वर्ष वाला पढी आसछु. So all these states से माने सब केतरा मित्र तांको भितर केतरा कहउथिले कि हो ठीक अछि मोर एई भुवनेश्वर भलिया बड़ प्रेस ये हे थाओ स्टेट हे थाओ किंतु भाई मु मोर अलगा देश करी के रहिबी. एंड वल्लभ भाई पटेल सेठु बाड़ी आनी के आसले और कहले कहला तू देश करी के रहिबो, इंडिया जॉइन करिवो ना पुलिस आनी के आसीबी. So obviously so he was एथि पाई ही is called the iron man of India. He unified all the states. केतेटा स्टेट्स प्रॉब्लम भी कले. फॉर एग्जांपल कश्मीर हे गला, हैदराबाद हे गला, जूनागढ़ हे गला. हैदराबाद एंड जूनागढ़, हैदराबाद तो इंडिया मझरे रही कहउथला मु पाकिस्तान रे रहिबी, पाकिस्तान सेठू कहउथला कि तम मेनलैंड भितरे मोर गोटे छोटिया यूनिट रहइबो. एंड वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू एंड दे ऑल लाफ्ड अ लॉट एंड देन पुलिस ने की गले. ऑफ कोर्स देयर वर राइट्स, देयर वर सम डेथ्स, बट इवेंचुअली इंडिया became what it is today. Okay, so this is holding together. The center is basically holding together the states. सेंटर चाहिए स्टेट्स रो नक्शा बदल दे पारिबो, स्टेट्स रो ज्योग्राफी बदल दे पारिबो, स्टेट्स रो जेमती छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना ये सब स्टेट्स सब बड़ बड़ स्टेट्स को भंगाई के बनाई छै. तो these states are holding together and they are the center is the powerful entity. So India and ए जिनसडा हमर आसीची कनाडा पाखरु. ओके,
these states cannot secede. Okay, एटा गोटे मेन पॉइंट. यूएस रो स्टेट्स कैन सेपरेट से चाहिए 50 स्टेट रु जड़े स्टेट कहि परियो मु अलगा हबा चाहूँ. एते इजी नुहे से मानको कॉन्स्टिट्यूशन एमती सब से माने रखिचंती रूल्स जोटा कि पास करबा तांको लेजिस्लेटिव असेंबली रे एते इजी नुहे बट से माने कोने ऑप्शन अछि से चाहिए करि परिबे. बट इंडिया रे स्टेट्स को पाखे ऑप्शन नाही. स्टेट्स कैन नॉट secede फ्रॉम इंडिया. सेंटर इज द मोस्ट पावरफुल organ. Okay, and hence India रो हमें कहूछु इट्स अ सुई जेनेरिस. सेंटर पाखे सेंटर इज द मोस्ट पावरफुल बट स्टेट्स को भी दिया है तांकर ओन काइंड ऑफ ओडिया रे कहले अस्तित्व. ओके, कि गोटे शेड्यूल अच्छी शेड्यूल 7 अच्छी यूनियन लिस्ट निजे से सेंट्रल लॉज बनेबो, स्टेट लिस्ट से स्टेट्स लॉ बनेबे. ओके, quickly we'll go through what are the federal features and all these things. Federal features of India. Okay, so federal features of India are first dual polity and division of powers. Just coily, this is the basic minimum requirement of federalism. Okay, then there comes a written constitution. Eta bhi coily, eta bhi achhi our country re. It's a rigid constitution. Provisions which are concerned with federal structure can be only amended by the joint action of the central and state governments. This is important. Okay, center माने फेडरलिज्म रे जो रिक्वायरमेंट होची कि स्टेट्स रो भी पावर दरकार. तो इंडिया रे भी केतेटा सब प्रोविजंस अछि जोटे कि हाफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर्स रैटिफिकेशन दरकार, अदरवाइज से बिल पास हे पारिबोनी. ऑल दिस टेक्निकल टर्म्स पे आई एम रियली सॉरी. वीडियो हमें बेसी बड़ा बने मु चाहिए बहुत बड़ा वीडियो बनने पारिबी. आई कैन गो टू व्हाट इज रैटिफिकेशन, व्हाट आर ऑल दिस टेक्निकल टर्म्स, बट आई एम अज्यूमिंग यू हैव अ बेसिक मिनिमम नॉलेज ऑफ ऑल these terms and hence I'm just rushing through a few concepts. Okay, then there is an independent judiciary, then there is bicameralism, there is a Rajya Sabha achi to take care of the interest of states. Okay, then there comes the unitary features. Now unitary features are interesting. Unitary features is why it's a sui generis. Okay, so there's a strong center, the states are not indestructible, there's flexibility of constitution, there's emergency provisions where सेंटर चाहिए स्टेट्स रे लिटरली चीफ मिनिस्टर को कहबो तू घरे बस मु मो लोक पठौची से जाई सेठी करबो. ओके, मोर जे गवर्नर अछि से जाई सेठी करबो. ओके, देन नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन. यूएस सेनेट रे 100 टा सीट अछि, ईच स्टेट गेट्स 2 सीट्स. जेते छोटो स्टेट भी कायनो होताओ 2 सीट्स, जेते बड़ स्टेट भी कायनो होताओ 2 सीट्स, 100 सीट्स, दैट्स इट. बट राज्यसभा रे सीट्स रो एग्जैक्ट वैल्यू मु भूली जाउची, बट यू नो फॉर एग्जांपल यूपी हैज मोर देन 80 सीट्स and MP Rajasthan they have 70, 60 etc. Odisha has certain number etc etc. So unequal division of seats achi, hence एठी population ऊपर dependent हे जाउची rather than equal representation जोटा कि federalism रो feature थिला. Okay, then आसुची no equality of state representation, all India services, integrated audit machinery. You can literally pause this screen and just go through it. I really don't want to make this video long because otherwise our purpose defeat हे जिवो जदी दीटा क्वेश्चन बुझिया पे आपण 20 25 30 मिनिट रो वीडियो देखिया पड़िबो ताले we are defeating the purpose of this video. Okay, appointment of governor. Now this is important. गवर्नर पाखे बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स थाए. से चाहिले केतेटा बिल रिजर्व करके रखी दबो प्रेसिडेंट पाई कि नहीं तुमको मेडा पास करिया को देबिनी जेतरे जाय प्रेसिडेंट टू साइन न आस जायची. ता माने कोन एटी सेंटर बेसी पावरफुल हे जायची. प्रेसिडेंट माने कोन बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहबे कि एटा पास हबो ना हबोनी. तो स्टेट्स पाखे सेठी से फ्लेक्सिबिलिटी नाही. स्टेट्स आर एट द मर्सी ऑफ द सेंटर. ओके, देन वीटो ओवर स्टेट बिल्स, integrated election machinery. So you understand the concept. There are so many features. After this understanding, let's try to solve this question. जोड़ा के आजिरो question थिला. Okay. So which of the following strengthen पचारछी. Which of the following strengthen the unitary character of Indian Constitution. Okay. First एमतिया question रे जोड़े 6 टा 7 टा एमती UPSC पचारछी, OPSC पचारछी. 6 टा 7 टा options थिला माने they obviously have set some options जोड़ा कि directly आपण eliminate कर परिबे. See, they are not your enemy. They are also trying to help you to get closer to that cutoff. Okay, so एठी कोन हे परिबो आमे आगे एमतिया सब फीचर्स बार करियो चेष्टा करिया which will directly help us get to the answer rather than going from 1 to 7. Okay, so आमे एबे देखिले कि written constitution is needed for federalism. So is it strengthening the unitary character? No. So मु देखिली कि 5 is a wrong option. Okay,
सो मु देखिबि एबे 5 को ऑप्शन रे अछि एंड मु ताकू स्ट्रेट एलिमिनेट कर देबी आउ किछि माने मोर बेसी पढिया दरकार भी नै सो 5 एलिमिनेट बी एलिमिनेट हे गेला सी एलिमिनेट हे गेला नाउ आई एम सीइंग दैट हियर 2 4 6 आर कॉमन 2 4 6 आर कॉमन तो मु 2 4 6 को देखिया दरकार नै ओके आई नाउ हैव टू डिसाइड बिटवीन 1 and 7 okay one kono one is single citizenship for all Indians. US has dual citizenship. You are a state of Washington and you are a state of um, USA. Okay, you are a state of this say Montana. You are also a state of you are also a citizen of USA. Okay, but India there is one single citizenship and this is actually strengthening the unitary character. Okay, कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं. Yes, I am a citizen of Odisha, but I do not have dual citizenship. Okay, there are no separate rights for me as a citizen of Odisha. Okay, so 1 2 4 and 6 is my answer. 7 मते देखिए आओ दरकार नहीं. Okay, this is how you solve questions like this. Let's quickly go to the second question. The second question was about parliamentary privileges. Parliamentary privileges, just brief idea. केतरा जिनस पार्लियामेंट्री मेंबर्स जिते पार्लियामेंट्री डिस्कशंस बेले हीटेड डिस्कशंस बेले इफ दे आर लूजिंग देयर सैनिटी एंड दे आर सेइंग सर्टेन थिंग्स तांको माफ अछि आमे जदी ताको पब्लिक एरिया रे कहबा या केतरा जिनस करबा हुए तो आमे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच रो बेसी फायदा उठे दोचे बट तांको पय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टिक्के रिलैक्स्ड से माने चाहिले आउ केतरा जिनस एमती तांको पाखे राइट्स अछि व्हिच इज ओनली कन्फाइन्ड टू द वॉल्स ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, this is the basic idea of parliamentary privileges. Now coming to the question, आगे मु पढ़ी statement number 2. Okay, the constitution does not provide for any provisions for parliamentary privileges. This is absolutely wrong. Parliamentary privileges article 105 and article 194 रे clearly mentioned अच्छी. Okay, and I can show this to you on in the constitution also. एटा से दिन भी मु देखैथली आपण मानको. See, constitution रे 105 powers and privileges एठी आपण वर्ड टा मिली गला of the house of the parliament and members and committees thereof. Okay, if I look for article 194, then article 194 रे भी there is powers, privileges etc of the house of legislature. सेटा parliament members पई एटा state legislative assemblies जो जाको हमें विधान सभा भी कहू. Okay, so you got what I am trying to say here. Okay, going back to my screen. So this was statement number 2. This is wrong. So I have already eliminated statement number B and D. Now I am left between 3 A and C. So 3 dita agare achi, which means 3 is obviously correct. According to constitution, the courts cannot inquire into proceedings of the house or its committees. Yes, this is correct. This is written in article 122. Courts cannot inquire into the validity of parliamentary proceedings, but जदि गोटे लिमिट बियॉन्ड तमे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रो फायदा उठेलो कि कार गोटे माने एमिति अपमान कर देलो जे तार राइट टू डिग्निटी इज हैम्पर्ड तो सुप्रीम कोर्ट कैन कम एंड से कि नहीं एठी तमे भूल कलो एंड दे कैन गिव यू ऑर्डर्स टू टू गेट अरेस्टेड और व्हाटएवर. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा लिखा हेछि कि आमे तुमको कि कोर्ट्स कैन नॉट लुक इनटू योर conduct in the parliament. Okay, so this is done. Eta Keshav Singh case रे को आइतला एटा आपनको मेंस पाए भी important. Okay, mains पाए भी this is also important. And now let's go to the first statement, which is where most of you got confused. A question, I think I have only 30% correct answers. Most have marked C3 only. The president, these do not extend to the president of India. See, 80 कौन गेम होचे, I'll just show you. Okay, so this is 105 article number, article number 105 रे लिखा है इतला that no member of parliament. So basically what we are saying is parliamentary privileges are granted exclusively to the members of parliament. Okay, but is president a member of parliament? No, and this is explicitly written in article 59. Okay, see, condition of president's office: the president shall not be a member of either house of parliament or house of legislature of any state.
So eta lekha haichi. Then 105 re lekha haichi ki privileges only extend to the members of the house. So 59 and 105 when read together tell us that they do not apply to the president. So this also becomes right, and the answer hence is 1 and 3 only. I think tikke clarity मिलला आपण मानूंको. And with that, I would like to end this discussion. For any queries, any doubts, you can just drop us a text. I'll try my best to explain it to you in a more reformed manner. Thank you.